Okay, sir. So we are live. 𝗙𝗂𝗏𝗺𝗻𝗃. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. It is my great pleasure to welcome you all on behalf of the Law Students Council Pakistan to yet another exciting and insightful webinar. The webinar series initiated by the Law Students Council aims to provide a virtual platform for experts, practitioners, and professionals to come together to share their valuable insight and knowledge. I am Momina Zegum, Secretary Mooting for the Law Students Council and your host for today. The topic of today's webinar is Fundamental Skills for Aspiring Lawyers and Learning Avenues for Fresh Law Graduates, which, if I say, is an extremely important and crucial topic, would not be an understatement. So, for this purpose, the Law Student Council has taken the liberty of inviting a very special guest speaker today, Mr. Muhammad Ahmad Qayyum. Ladies and gentlemen, before I begin, it is my distinct privilege to introduce our esteemed guest speaker for today's webinar. Our guest speaker is a true visionary whose contributions have shaped the legal fraternity and transformed perspectives. Throughout his career as a barrister, Mr. Qayyum has demonstrated an unwavering commitment to legal education, serving as a chairman of the Legal Education Committee in Punjab Bar Council. He is a profound advocate of the Supreme Court and also the managing partner at Qayyum and Associates. Our guest speaker embodies the true spirit of excellence and the dedication that we admire. Sir, we are extremely honored to have you here with us today, and it is our absolute privilege to have this opportunity to learn from you. Before we start the discussion, sir, is there anything that you would like to share with us? Not particularly, just that कि आपने बहुत ज़्यादा कह दिया है, and I would like to actually speak in Urdu because frankly issue ये है कि गुफ्तगू उर्दू में ही करनी चाहिए because that is one of the most essential skills. अगर आप ट्रायल के अंदर इस प्रोफेशन में आप इब्तिदा में आ रहे हैं, unfortunately most of our conversation tends to be in English, or the skill set necessary to succeed in Pakistan, खास तौर पे lower court के अंदर one of the skill sets is to do it in Urdu. अभी मैं इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ, दोनों ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहा हूँ, but that is something that I think one should be doing यहाँ पे तमाम दोस्तों के साथ. Very well said, sir. I couldn't agree more. So, moving on, ladies and gentlemen, before we formally begin this session, I would like to give a brief overview of what you can expect from this discussion. We shall dive into the potent questions of what skills are essentially required for a law student or a fresh graduate before they're stepping into the legal field. How can they enhance these skills? And whether technological advancements have a role to play in a lawyer's career or not, along with many more. Towards the end, our delightful audience shall have the opportunity to ask questions in the chat, which shall be addressed in order to make the session more interactive. So, sir, I want to begin by asking you the most fundamental question that comes to the mind of a young law student or a fresh graduate. That is, what are the key research skills that aspiring lawyers need in order to effectively analyze legal issues and to find relevant precedents? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, fundamental issue इसके अंदर research skills come much later. Analytical skills are more important. और आप वो इंटरैक्टिव बीच में कह रहे थे, I would like to actually demonstrate कि how exactly a lawyer thinks. A lawyer does not think like an ordinary person. A lawyer is, और आप और law student से भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है. A lawyer principally thinks in terms of problem solving. क्या है, किस तरीके से करना है. तो बेसिकली आज के बाद आप जितने भी तमाम यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, you should treat yourself as your own client. How can you improve your own situation? मैं तो आपको जो आज गुफ्तगू वगैरह करेंगे, most of this stuff is going to be general pointers. मैं अपने experience से कह रहा हूँ. It would be applicable generally to most of the people, but हर बंदे की अपनी situation है. हर बंदे के अपने शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, कहाँ पे बोला ज़्यादा बेहतर नहीं जाता, रिसर्च नहीं की जाती, लिखा नहीं जाता, वो वाली चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे एड्रेस करने की बेशुमार ज़रूरत है. कमिंग टू योर क्वेश्चन के रिसर्च स्किल्स वगैरह किस तरीके से करते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके साथ मैं जो भी एक्सरसाइज करूंगा, वकालत के लिए
You should ask yourself, and I ask myself कि क्या चीजें चाहिए, वकालत में होता क्या है। वकालत में क्लाइंट आता है, उसकी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को आप समझने की, सो यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंस अबाउट दिस एज वेल। उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च या बैकग्राउंड वगैरह एज वेल। बट उससे ज्यादा फिर करके आपने कोर्ट में लिख के लेके जाना है। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू राइट एज वेल। उसके बाद वो चीजें उठा के आपने जाके एक जज के सामने पेश करना है। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू स्पीक एज वेल। इट्स नॉट लाइक अ मूवी कि जी आपने तकरीर करनी है, बट यू नीड टू बी एबल टू कन्वे योरसेल्फ एंड कम टू द पॉइंट। क्लियर माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एनालिटिकल स्किल्स वाली जो बात है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उसको क्या चाहिए, मजमून नहीं लिखना, उसके लिए क्या रेमेडी आप ले कर सकते हैं, कोर्ट में जाके क्या करना है, एंड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट योरसेल्फ एज वेल। उससे उसके बाद रिसर्च स्किल्स आते हैं। रिसर्च स्किल्स इज अ माइनर, पीपल टेंड टू थिंक इट्स अ मेजर थिंग, बट इट्स अ माइनर थिंग। यहाँ पे स्किल सेट के अंदर किताबें और जो नॉर्मल इब्तदा के अंदर जिस नौयत की आप चीजें वगैरह देखेंगे ना, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं होती। सादे सादे दावे आपको इब्तदा के अंदर मिलेंगे जो कि 200 साल से ऑलरेडी उसी तरीके से सारे का सारा चल रहा है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, गार्डियनशिप का होगा, इनहेरिटेंस के मामले होंगे। नो वंस गोइंग टू गिव यू मल्टी बिलियन डॉलर इनहेरिट आर्बिट्रेशन का मामला, और जिसके अंदर आप बीच में बैठ के रिसर्च करेंगे। सो समटाइम्स वी टेंड टू ओवरस्टेट द ये जो रिसर्च वाला एस्पेक्ट है ना, बट एनालिटिकल स्किल्स, उस बंदे की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो जज के सामने मैंने कर पेश करने हैं, और वो एविडेंस में क्या लेके आएंगे, विटनेसेस कौन से होंगे, दैट इज स्टफ दैट यू नीड टू बेसिकली बी फोकस्ड ऑन एटलीस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। ये जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं उससे दूर रहना चाहिए। वो देर वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू ऑल ऑफ द यंग स्टूडेंट्स, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन। और रिसर्च भी, आई मीन यू डू नॉट वांट टू बी माय रिसर्चर इन माय दफ्तर फॉर द नेक्स्ट 3 or 5 years। आपके रिसर्च के स्किल्स अगर हैं तो यू स्टिल नथिंग, बिकॉज एज अ लॉयर, बिकॉज if you don't have your own cases and you're not arguing, you are only looking at propositions that I give to you कि यार ये देख दो। बट इफ यू आर डूइंग योर ओन केस, यू विल थिंक कि अच्छा यार इसमें ये मेंटेनेबिलिटी का भी इश्यू आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो रिसर्च से ज्यादा जब आप मुकदमा कर रहे होते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत इसेंशियल है टू ट्रीट ईच एंड एवरी केस एज देयर ओन, not just research it. Research वगैरह is sort of minimal aspect of it. I hope I answered your question, but वो जो premise था उससे थोड़ा सा मेरा disagreement वगैरह था कि research is not all that important. Strong research skills, अच्छी बात है, it's something that if you get at the beginning of your career, it adds value to you. You would be irreplaceable for your boss, but at the end of the day your career should be focused on कि जी मैंने अच्छा वकील बनना और मैंने केसेस लेने और मैंने केसेस कोर्ट में जाके करने। Yes, sir, that was very well explained. Moving to the next question, given the evolving nature of the legal field, what steps can aspiring lawyers, take in order to stay updated on the new laws, regulations, and technologies? Though letter aspiring lawyers, by do you mean students by that, or do you mean people who have just entered into the profession? Because दोनों अलग So अलग fresh चीजें हैं। graduates, fresh graduates who have just entered into litigation and into the field. देखिए, once again as I was saying कि yes, it's good that you keep yourself abreast of इसको कहते हैं all of the new developments। उसके लिए तो आप PLDs वगैरह और जो journals हैं, that is the more appropriate way। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर तो आपको की केसेस वगैरह का पता चलता रहता है, मगर वो आपकी रोज की वकालत का मामला नहीं है। इमरान खान का केस आपको नहीं मिलने लगा अगले 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। और बाकी भी जो सारे हैं उसके ऊपर वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं है, ना बहस करने की जरूरत है। यू नीड टू बी, हर बंदे का फोकस इसलिए होना चाहिए कि यार वो उस नौयत के मुकदमों में क्या हो रहा है जो जिस नौयत के मुकदमे मुझे पहले 2 साल में मिल सकते हैं, जहां से मेरी कमाई हो सकती है। वंस अगेन छोटी मोटी बेलें इसको कहते हैं, ट्रायल्स वगैरह इसको कहते हैं, इनहेरिटेंस के मामला है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, गार्डियनशिप के, कंज्यूमर कोर्ट्स, बेसिक बैंकिंग के केसेस वगैरह, स्टफ लाइक दैट। सो यस,
once again, you are not in the profession to write a thesis. You're not an academician. What you academic, you what you're going to do is, in this particular profession, you're going to come do basic cases ibtada ke andar. तो उसके लिए the easiest best way to do it is by doing it, being involved with law, being involved with competent people, seeing their work. अगर एक ऐसे चेंबर में आप जाते हैं जहाँ पे दिन में 28 केसेस हैं, तो 28 फाइलें खोल के आप देखेंगे. दैट इज द बेस्ट टीचिंग मेथड. अगर आप किसी भी वकील से पूछें, अपने आप को पुट योरसेल्फ इन द सेम in the shoes of that particular person. वैसे तो अदरवाइज पाकिस्तान लॉ साइट और PLJs, PLDs, ये सारी की सारी किताबें तो मौजूद हैं, एंड दैट इज एन एसेंशियल स्किल दैट यू आज भी मैं बीच में अपने रजिस्टर ही अपडेट करके आया हूँ. सारे PLD के नए शुमारे भी मैं बीच में पढ़ता हूँ. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल. तो you principally do it through PLJs, PLDs. Thank you, sir. That was very well articulated. Sir, I also believe that networking is also very essential in the legal profession. So, what advice would you give to the aspiring lawyers on building meaningful professional relationships within the legal community? देखिए, विद इन द लीगल कम्युनिटी तो आपके क्लाइंट्स वगैरह नहीं आने हैं, और वहाँ से ना आपको कोई इतना काम आना है. नेटवर्किंग तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइंट्स के लिए इन सोसाइटी एट लार्ज, और आपके इब्तिदा के अंदर दोस्त फैमिली, उनके आसपास जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वहाँ से आपको काम आएगा. नेटवर्किंग के साथ साथ, आई मीन, सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन एंड फेसबुक आर इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू देखिए, नेटवर्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू अपेयर एज अ प्रोफेशनल लॉयर हु कैन गिव सॉल्यूशंस एंड हु कैन एग्जीक्यूट फॉर योर क्लाइंट. अगर आप फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर नॉन सीरियस तौर के ऊपर आप नज़र आ रहे हैं, और आपका स्किल सेट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा, तो जितनी मर्जी नेटवर्किंग कर लें, आपके चचा भी आपको केस अपना नहीं देंगे कि यार वो इज नॉट अ सोबर गाय, ये वगैरह सारे का सारा. Talk about the law. Yes, networking is very very important as well, because a lot of इब्तदा के अंदर जो लोग प्रोफेशन के अंदर आते हैं, अगर आपने मेरे दफ्तर में 6 बजे तक काम किया, घर गए, खाना खाया, सो गए, अगले दिन सुबह आ गए, फिर आ गए वगैरह, तो नो वन इज गोइंग टू फाइंड आउट दैट दिस gentleman is a good lawyer and I should give him the case. You need to be seen as a lawyer. You need to be seen as talking as a lawyer as well. वो ज़्यादा important चीज़ें हैं. प्रोफेशन के अंदर नेटवर्किंग वगैरह, it's a cut throat profession, dog eat dog. Why would I let you get ahead to take away my rosy roti from me? सो वो वाली चीज प्रोफेशन में नेटवर्किंग, यस, आपकी कॉम्पिटेंस की हद तक अगर आपने नेटवर्किंग अच्छे चेंबर्स ज्वाइन करने, उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, या अगर आपने गवर्नमेंट साइड पे जाना है, वहां पे इंपॉर्टेंट है. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नेटवर्किंग फॉर द क्लाइंट है, और क्लाइंट आपको वकीलों के अंदर से तो कम ही आएगा, या कोई वकील आपको अपना केस तो नहीं देने लगा इब्तदा के अंदर, आपसे छीनेंगे. I couldn't agree more, sir. So now, coming to the topic of legal education, sir, do you think continuing legal education and pursuing an advanced degree can benefit practicing lawyers in the long run? And how can fresh law graduates stay engaged in the ongoing learning process even after their education? देखिए, I am not in favor of law is an entirely non-academic profession. It's a practical profession. I am not. If you've got a lot of money to burn, then by all means do LLM और ये सारे का सारा. मगर मेरे नज़दीक 2 मुकदमे कर लेना लॉ के अंदर PhD करने से ज़्यादा आपको सिखाता है. Frankly, because PhD के अंदर आप मजमून लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, एक छोटी सी फील्ड के ऊपर एक आपका थीसिस का नुक्ता होता है, आप बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं, लोग आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है. लेकिन जब सिविल कोर्ट के अंदर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो यू हैव जीरो एबिलिटी एट ऑल. सो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, यस, आई एम इन फेवर ऑफ. यहाँ पे तो इब्तदाई लीगल एजुकेशन भी नहीं है, बट आई मीन लीगल एजुकेशन नहीं, लीगल ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. Academic degrees, once you get into the profession, I don't think they particularly matter इतने ज़्यादा. हाँ, they do matter to your employers. अगर for example आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, LLM वहाँ पे आपके लिए यूजफुल होगा. मगर आपने अगर इब्तदा के अंदर वकालत करनी है, आई मीन, सलमान अकरम राजा साहब 15-20 साल के बाद LLM करने के लिए हार्वर्ड वगैरह गए थे.
दैट इज समथिंग यू माइट वांट टू डू। आई मीन हर बंदे का दिल भी चाहता है कि आप बाहर जाके पढ़ें और ये करें, आपकी अंग्रेजी बेहतर हो, अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर वगैरह नहीं, बट आई डोंट थिंक इट एड्स टू मच वैल्यू टू यू। फॉर दैट रीजन बार इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, बट बार की डिग्री फॉर एग्जांपल बिकॉज वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेन करती है, आपको इंग्लैंड का प्रोसीजर सिखाती है, ड्राफ्टिंग करवाती है, एडवोकेसी करवाती है, दैट इज मोर इफेक्टिव। कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन के लिए हमने बार वोकेशनल कोर्स शुरू किया हुआ है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई I mean, my brother, for example, is practicing abroad, probably makes 10 times more money than I do. He LLM भी है, उसने barrister भी है, solicitorship की हुई है. Yes, it adds value, but not in Pakistan, or at least not इब्तदा के अंदर इस profession में. I have not done LLM. I did bar, I did as LLB, Oxford से, and जितना भी मैंने कुछ सीखा है वो मैंने लाहौर सिविल कोर्ट से सीखा है. I was zero when after all my elite degrees, I landed in Pakistan. So it's a bit controversial thing to say, but I really think कि वकालत करने से आती है, डिग्रियों से बिल्कुल भी नहीं आती, और बल्कि डिग्रियां हैंडीकैप आपको एक तरीके से कर देते हैं. आप मजमून देना, आपकी एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ वैक्स हो जाती हैं, और आप मजमून तक तो लिख लेते हैं लेकिन फोकस्ड वकालत करनी आपको नहीं आती. Yes, sir, very well explained. Sir, I would also like to know, in your opinion, is it better for fresh graduates when they are starting, their legal career, to either join an already well-established senior or advocate in the field, or in contrast, join a law firm, considering that both of these avenues, they have their own pros and cons? दोनों को प्रॉब्ली शायद नहीं करना चाहिए. करना वो चाहिए. देखिए बात ये है, आप दिस इज द प्लान दैट एनी न्यू पर्सन शुड फॉलो. एक्सटर्नल वालों को खास तौर पे, लोकल वालों को भी 3 महीने पहले, अगर आपने सिविल में स्पेशलाइज करना है तो पहले 3 महीने आप जाकर एक ऐसे बंदे के पास काम करें जो कि क्रिमिनल का काम करता है, ट्रायल का. 3 महीने आप उसके साथ कोर्ट्स में जाके सारी की सारी चीजें, सीआरपीसी प्रोसीजर्स, फॉर्म्स भरें, उसके मुंशी के साथ जाके बैठें और उसके मुंशी के साथ फाइलें भरें और सारे के सारे कोर्ट्स करें. चूंकि आपने सिविल में स्पेशलाइज करना है, उसके बाद 3 महीने के बाद यू शिफ्ट ओवर टू सिविल का चेंबर, जहां पे वंस अगेन जिस बंदे के पास ट्रायल का काम है, जो नीचे के लेवल पे काम करता है, जिसका दिन में मुकदमे में 28 मुकदमे लगे हो. नाउ दैट कैन बी अ फर्म, दैट कैन बी अ वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन जो कि नीचे सिविल कोर्ट के अंदर आपको काम के लिए भेजता है. What that person is giving to you is access to 28 cases की files in a day. 28 सिविल जजेस के सामने, यू विल नॉट बी आर्ग्यूइंग बिफोर 28 पीपल, बट 28 लोगों की पूरी फाइल्स, उनके मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ऑर्डर शीट्स, एविडेंस, सारी की सारी चीजें आपके हाथ से गुजरी होंगी. जाना आपने वहां पे है. अब नो वंस गोइंग टू गिव यू इब्तिदा के अंदर बेशुमार केसेस. अभी मेरे से 2 मिनट, आपसे 2 मिनट पहले ही फेसबुक के ऊपर एक मोहतरमा मुझे कह रही थी साहिवाल से कि जी वो सिखाते नहीं है, उनके पास इतना कहाँ टाइम ही नहीं होता. अगर सर के पास टाइम नहीं है तो उनकी फाइलें वगैरह खोलना सर ने नहीं आपको खोल के बताना या बैठा के करना. माय फादर नेवर सैट मी डाउन एंड टॉट मी. आई वेंट टू कॉर्पोरेट चेंबर. मेरे वालिद साहब ने इनिशियली भेज दिया था, सैयद अली जफर साहब का चेंबर था वहां पे. मोस्ट पीपल टेंड टू हाई कोर्ट, मांडवी वाले जफर के नाम से चेंबर है, कराची में भी उसकी ब्रांच है. व्हाट आई गॉट फ्रॉम देयर वाज द अपॉर्चुनिटी. दिन में 28 केसेस होते थे सिविल कोर्ट के. अली साहब खुद एक में ही शायद जाते थे, नीचे सिविल कोर्ट की टीम थी उसमें हिस्सा लग डाल के दिन में 28 से 28 केसेस किए हैं, 18 केसेस किए हैं, 5 आर्ग्यू किए हैं, हर एप्लीकेशंस बनाई हैं, एप्लीकेशंस के जवाब बनाए. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. आई वो अगर आपको फर्म में मिल रहा है बहुत अच्छी बात. फर्म में और किसी बड़े बंदे के पास आपने अपने जहन में कम से कम पंजाब के अंदर, कम से कम लाहौर में ये जहन में रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना काम खुद अलहदा करना है. मोस्ट फर्म्स विल नॉट गिव यू पार्टनरशिप रिगार्डलेस ऑफ आप कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह. मोस्ट फर्म्स विल आपको एक पोर्शन ही तनख्वाह, अगर आप अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं, मगर एक तरीके से वो फिर भी नौकरी है. ज्यादातर पैसे बीच में फर्म के पास जा रहे होंगे या सीनियर के पास जा रहे होंगे. आपने अपना स्किल सेट करके वो ठप्पा अपने ऊपर लगवा के देन यू नीड टू मूव ऑन.
ये फोकस आपके जहन में होना चाहिए। और सबसे ज्यादा काम का आपको जहां पे एक्सपोजर मिल रहा है और उस चीज का एक्सपोजर मिल रहा है कि जिस नौयत से आपकी पहले 3 या 5 साल में कमाई हो सकती है। आप मेरे पास आके अगर आप आबिट, मैं हाई कोर्ट का काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का करता हूँ, या मेरे वालिद साहब जब हयात थे उनके साथ आपने सुप्रीम कोर्ट के आप चैंपियन वकील बन गए और अभी तक आपको सिविल कोर्ट का लाइसेंस मिल रहा है, तो यू वेस्टेड योर टाइम एंटायरली। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि व्हाट इज, आपको वहां पे काम क्या मिलेगा या एक्सेस टू किस नौयत का काम मिलेगा और वो आप में क्या वैल्यू ऐड करता है। डू नॉट एम फॉर नीश एरियाज। वो आपका आगे सवाल भी एक आपने मेरे से शेयर किया हुआ था, वो भी आएगा कि नीश एरियाज या एरियाज फ्रॉम विच यू कांट अर्न आर्बिट्रेशन के। आप किंग बन गए तो आपको आर्बिट्रेशन बड़ी तो कोई 10 साल तक नहीं मिलनी या 15 साल तक नहीं मिलनी। आपने हाई कोर्ट की रिटें अगर आपने सीख ली तो आपने क्या किया, आपको तो 2 साल के बाद लाइसेंस मिलेगा हाई कोर्ट का। सो आप फाइलें उठाते रहेंगे। सो फोकस शुड बी व्हाट विल मेक यू earn, what will that is the stuff you need to learn, the donkey work, the सादा काम, उधर से उसके ऊपर फोकस करना है। और इस नौयत के चेंबर, वो बड़े चेंबर्स में भी मिल जाता है, मांडवी वाले जफर में भी मुझे बहुत मिला। और एक बड़े अच्छे बड़े वकील के पास भी अगर वो अपने छोटे वाले जो मुकदमे वो अपने जूनियर्स को देते हैं तो फिर हाँ वहां पे कंटिन्यू करें। अगर वो लेते एतजाज साहब की तरह, अगर आप फॉर एग्जांपल आप छोटे मुकदमे लेते ही नहीं है एस एम जफर साहब की तौर के ऊपर या वो करके, तो फिर वहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि यू जस्ट बिकम अ फाइल कैरियर वहां पे जाके। So, words of wisdom and definitely something to learn from. So, moving further, more often than not, नॉट law दैट आई एम students सेइंग and कि एतजाज साहब के पास नहीं जाना चाहिए, नाराज ना हो जाए, इज अ ग्रेट टीचर। yes, sir. Yes, sir. I agree. As I was saying, that more often than not, fresh graduates, they tend to be confused that which area or field of practice they are more inclined to. So, for such students and graduates, what would you propose should be, the course of action in deciding कि वो कौन सा field or area of practice choose करें? It would be incredibly stupid for any lawyer to go ahead and a सख्त word use कर रहा हूँ for them to choose any particular area. The client choose what type of a lawyer you're going to become. Why would anyone go ahead and, for example, banking क्या market के अंदर 10% काम है, so आपको 90% लोगों से पैसे लेने की जरूरत पसंद नहीं है। और फिर आपकी जब वकालत नहीं चलती नीश एरियाज के ऊपर या एक साइड के ऊपर फोकस करके, तो फिर आप कहते हैं यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ द मैक्सिमम चांसेस टू सक्सीड। इट्स नॉट नेवर गोइंग टू बी कि टैक्सेशन में आप चले गए 5% या 10% काम है जहां पे बड़े बड़े ऑलरेडी बंदे एस्टैब्लिश बैठे हुए, तो हाउ आर यू गोइंग टू गो, और वेल कनेक्टेड भी नहीं, यू हैव शॉट योरसेल्फ इन द फुट। ये करना ही नहीं चाहिए। करना तो ये चाहिए पहले 5 साल में मुफ्त मुकदमे, जिस नयत का मुकदमा आ रहा है यू आर गोइंग टू से कि जी मुझे करना आता है, मैंने दें मुझे दें, मैं मुफ्त में कर देता हूँ, मेरे खर्चे वगैरह आप पूरे कर दीजिए वगैरह, बिकॉज यूर लर्निंग। सेकेंड वन इज व्हाट यू अर्न फ्रॉम। और उसके साथ आपने करना है तो किसी का भी बंदे का कि जी मैंने फौजदारी नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो you don't like getting money from 50% of the people out there. You're reducing your chances to succeed actually very significantly, to earn very significantly. So बात ये है, this is something, किसी किसी जूनियर को या किसी इब्तदा के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सोचें कि जी मैं अपनी मर्जी से, मैं आई एम टू एलीट टू गो टू सिविल कोर्ट, मैं तो सिर्फ हाई कोर्ट के पकड़ूंगा या मैं ये पकड़ूंगा या मैं वो करूं। हर नौयत का करना है, सारों के पैसे इक्वल बाजार के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आपको क्रिमिनल वाले भी उसी के बराबर होते हैं, तो डू ऑल ऑफ द वर्क। एंड जिस नौयत के क्लाइंट्स आपके आएंगे, फॉर एग्जांपल आपका हल्का है, मेरे बेशुमार म्यूजिशियंस दोस्त थे, फवाद खान, अली नूर, ये सारे के सारे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स करते करते शुरू में मैंने मुफ्त में किए, फिर अब पैसे मिलने शुरू हो गए, उसके साथ फिर उनके जो मुकदमे हैं वो मिलने शुरू हो गए। दिस इज हाउ यू डू। नाउ आई डोंट नेवर प्लान टू बिकम कि जी मैं एंटरटेनमेंट लॉ में स्पेशलाइज कर लूंगा, बट दैट इज वन ऑफ माई स्पेशलाइजेशन बिकॉज आई हैंडल दोज केसेस, arbitrations भी, ये भी सारी की सारी। So never pick and choose. Try to keep yourself, give yourself the maximum chances to succeed. Maximum number of clients, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। So उससे मैं disagree करता हूँ बहुत strongly.
Very well explained, sir. So, continuing onwards, coming to the practical side of litigation, sir, how important is it for fresh graduates to, actively engage in the bar process and elections, and what benefit, in your opinion, does that reap? दो तीन चीजें. बार प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्शन. पीपल टेंड टू थिंक आजकल के जी बार प्रोसेस या बार में जाना इज लाइक इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना और वही सिर्फ चीज वगैरह है. नो, नॉट एट ऑल. बार इज अ लिविंग एंटिटी और बार की चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. इट विल गिव यू कंफर्ट. It will क्या मामलात हो रहे हैं, you will compare notes with other people, you will see all of the legends of the profession, you will talk to the legends of the profession, sit down, eat with them. उनको देख के आपने सीखना है सारे का सारा. However, ये कि इसको कहते हैं, so वो do not get involved पहले 3 से 5 साल के अंदर in bar politics at all. You will only be used as fodder. You will not, आप खुद तो खड़े हो नहीं सकते. मगर अगर आप किसी के साथ हाँ वो बार के, that is much much secondary. What is important is your career इब्तदा के अंदर, your earning इब्तदा के अंदर. आपने मुझे अगर इलेक्शन जितवा दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सारे का सारा. बट अगर आपकी रोजी रोटी नहीं हुई और आप मुकदमे नहीं कर सकते, तो यू आर गोइंग टू सफर. बेशुमार लड़के इस ट्रैप के अंदर भी फंस जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट, बिकॉज एक ये बहुत गंदी चीज है कि द प्रोफेशनल लॉयर्स दीज डेज वो आम वकील को छूत समझते हैं और बार पॉलिटिक्स नहीं, बार में आना पसंद नहीं करते. बात ये है, ये जो आपके ऊपर पॉलिश और ये जो सारी की सारी चीज हुई है, वो आपको फिर नॉर्मल क्लाइंट भी नहीं मिलेगा. और नॉर्मल वकीलों से आप जब तक इंटरैक्ट प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, सिविल कोर्ट का माहौल वगैरह नहीं देखेंगे, आप उससे नहीं होंगे, तो you will not be giving yourself chances to succeed. So bar is very very essential. मैं खुद बार का अहदेदार हूँ. बार is a community. It will hug you and take you in, and आपके जो मसले मसाले हैं, some of my best friends are from the profession मेरे साथ जो शुरू किया. it is a gift. बट पॉलिटिक्स के अंदर जाके और ये वो करके उसके मैं नहीं देखिए. बार इज अ प्लेटफॉर्म एज वेल. बाय द वे, आपने ये जो चीज कर रहे हैं अभी, you could have done it from the platform of the bar association as well, bar council as well. You can you like to do शायरी, you like to do dramas, बार के लेवल के ऊपर करें. शेक्सपियर का पहले एक आई थिंक मिड समर्स नाइट ड्रीम सबसे पहले ग्रेज इन के अंदर हुआ था. ये बात, आपने डिबेट्स कंपटीशन करवाने करवाएं. बात ये है इसके अंदर कि लोगों से इंटरेक्ट करोगे ही तो झाका खुलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा. बोलना है, इन्हीं बंदों के साथ लड़ाई करनी है ना बाद में कोर्ट में जाके, इन्हीं को चित करना है. तो अगर आप एतजाज साहब की औ में हैं और आप पहली दफा देखते हो एतजाज साहब आ गए, ये बीच में पकड़ के और आपकी टांगें कांपनी शुरू हो गई, अगर आपने उनको देखा हुआ है, पास से देखा हुआ है, क्या है वो, ये भी ह्यूमन बीइंग है, ये भी इसी तरीके से, तो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस. सो ये सारी की सारी चीजें करनी है. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कम्युनिटी. यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. But do not get just become a सियासी वकील, then you don't particularly earn. ये मेरी सजेशन है इब्तिदा के अंदर खास तौर पर यंगस्टर्स को. So I couldn't agree more with you. So now, analytical thinking and research skills are also some of the essential skills if one wants to succeed in the legal practice. So you're also part of the education committee, or given the education system of Pakistan, which is not primarily focused on skill building, what methods would you propose that would help students build these kind of skills? We're talking about students right now. Participate in the class. अगर क्लास में बोलेंगे नहीं तो क्या कोई जादू का टीका तो नहीं है ना कि जब डिग्री हासिल की तो फर बोलना शुरू कर देंगे. अगर आप क्लास के अंदर लिखेंगे नहीं, आई यूज्ड टू टीच एट लॉ कॉलेज, ये पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज. वो लड़के बीच में उनसे काम ऐसे लिखवान हफ्ते में एक लिखवाया करते थे, तो उसकी शिकायत जाके लगवा दी कि लिखवाता है हमारे से. तो बात ये है कि अगर लिखवाता हूँ मैं उनसे वगैरह, तो वहां पे जाके के साइन लैंग्वेज के साथ जज को बीच में आपने करना है. बात ये है, राइट अ लॉट, स्पीक अ लॉट, पार्टिसिपेट अ लॉट, ये सारी की सारी चीजें खुद करें. सिर्फ पढ़ाई से नहीं होना. हाँ, किताबें भी बेशुमार पढ़ें, कोर्स का भी बेशुमार पढ़ें, बिकॉज
इतनी मोटी फाइल पढ़नी है तो इतनी मोटी किताबें अगर पढ़ी होंगी तो इतनी मोटी फाइल आराम से आप पढ़ सकेंगे। इतना 5 सफ़ों का अगर आपको लिखने की बीच में आदत है तो 5 सफ़ों की पिटीशन लिखने में मसला नहीं पड़ेगा। अगर आपने जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं, आपने वैसे कि आप ड्रामे में खड़े हो गए, आप में कॉन्फिडेंस है, आप खड़े होके आपको गाने गाने आते हैं, पसंद है या वगैरह, आप वो गा रहे हैं, आपकी जुबान खुली हुई है, या आप इस तरीके से करके कम से कम कॉन्फिडेंस तो होगा। So this is how you build your skill. Now I came across केपी कैसे चंद स्टूडेंट्स आए हुए थे चंद दिन पहले, वो कहते हैं कि जी हमें डिबेट्स नहीं करने देते हमारे स्कूल के अंदर, वो कहते हैं सिर्फ पढ़ाई करो। तो अब उनको मैंने वो हैरी पॉटर की आपने फिल्म देखी हुई है जिसमें वो एक गंदी सी टीचर आ जाती है जो उनको कहती है कि जी जादू नहीं तुम लोगों को सिखाना। तो हैरी पॉटर और उसके दोस्त मिलके एक क्लब बना लेते हैं जिसके अंदर वो बैठ के सारी की सारी चीजें खुद करते हैं। बात ये है, आप इट्स अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग विद योर ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। आप मूड का भी वर्ड आपने यूज किया, मूड्स भी आप खुद कर रहे हैं प्रॉपर। और वो इसको कहते हैं बहुत एरी फेरी किस्म के मूड्स ना करवाइए। नॉर्मल जो कि जी बेवा है उसको उसकी इनहेरिटेंस करवानी है तो उसके लिए क्या तरीका होगा बताइए, आके बहस करें इस केस में। उस तरीके से दिस इज समथिंग यू कैन सेट अप योरसेल्फ, डिबेट्स करें, पोएट्री करें, राइटिंग करें करके, बिकॉज आपका स्किल सेट आपने, मैंने फिर कहा कि वही चीजें एनालिटिकल स्किल्स में जो चीजें वकालत के लिए चाहिए वो जादू का कोई टीका नहीं है कि आपको लगा दें, बिकॉज हमारी लीगल एजुकेशन का सिस्टम ये सिखा ही नहीं रहा। हमारा लीगल एक ना बोलवाते हैं, ना कि ज्यादा पढ़ाते हैं, गाइड से पास हो जाते हैं, ना लिखवाते हैं, ना ये करके। तो हाउ इज दैट गाय गोइंग टू शो अप एंड फर बोलना भी शुरू कर देगा, लिखना भी कर देगा, और उसमें जादू भी पावर आ जाएगी कि जज को, इंटिमिडेटिंग जज को मेरे खिलाफ वो कन्विंस कर सकेगा अदरवाइज, और रिसर्च भी करेगा। So the thing is, what I'm pointing out to you is this is what everyone has to open their eyes and try to sort it out. आपके साथ वाला अगर कोई बंदा कर रहा है, you only have to look after yourself. मूड के दूसरा मुझे मसला ये पड़ता है कि जो उनके पसंदीदा टीचर्स के पसंदीदा एक दो होते हैं वो तो मूड में कर लेते हैं, बाकी उनका चेहरा देख रहे होते हैं, अटेंडेंस में बैठे होते हैं। एवरीवन नीड्स टू स्पीक अप इन क्लास। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। और बाय द वे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये फरफर जो बोल रहा हूँ, मेरी टांगें कांपती थी, मेरी बिल्कुल मस्कीन सी आवाज थी मेरी, आई वाज जीरो -10 in my ability to speak. I got into this profession, I had no confidence at all. तो I got into this profession because I wanted to improve myself. और वो एजुकेशन के दरमियान बार में भी वो मेरी टांगें कांपती थी, वकालत में भी टांगें कांपती थी। अब मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, अभी भी कांपती हैं, लेकिन आई मेक अप फॉर इट थ्रू बेटर प्रिपरेशन, taking a breath and explaining आसान जुबान के अंदर whatever my point is, focusing on the point rather than शेरो शायरी और aggressively बोलना। So this is skill set. All I'm saying is कि खुद करें अगर मिलता नहीं है। But a lot of the times you seem to think, people tend to think कि जी उनके लिए कोई खास बीच में एहतमाम होना चाहिए। क्लास में खड़े होके अगर आप बोल ही लेंगे, सबसे फंडामेंटल स्किल वकालत के अंदर ये है कि नुक्ता क्या है। एंगेज विद द मटेरियल दैट इज एट हैंड एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ नुक्ता क्या है, अब 3 जुमलों के अंदर मैं इसको कैसे ब्रीफ करके आगे किसी को बयान कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट वकालत इज एट द एंड ऑफ द डे। The first 3 to 5 sentences out of your mouth before a judge, everything else is just under the surface. Very well explained, sir. So, moving ahead, fresh graduates, who are recently entering the job market and they are not having any kind of experience whatsoever, what would be some effective strategies you would propose for recent graduates, in order to navigate through job interviews and to secure positions in law firms, corporations, or government agencies? 2-3 चीज़ें, गवर्नमेंट एजेंसीज का तो अखबार वगैरह, और दूसरी प्राइवेट सेक्टर जो है अखबार के अंदर इश्तेहारों के जरिए ही होता है, बट अ लॉट ऑफ दैट इज थ्रू सिफारिश अनफॉर्चुनेटली। और आई डोंट मीन टू पुट समवन ऑफ, बट आई डू नॉट वांट टू मिसगाइड पीपल। बात ये है, व्हाट इट इज अ कट थ्रोट बिजनेस आउट देयर। पंजाब के अंदर तो अल्टीमेटली ये वकालत आप नौकरी के लिए नहीं करते, आप अपने प्राइवेट चैम्बर वगैरह बनाने के लिए, या अल्टीमेटली दोस्तों के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ पे फर्म कल्चर यहाँ पे नहीं मौजूद। अगर आप ये
आप ग्रेजुएट हो गए, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, यू प्रोबेबली हैव मिस द बस, बिकॉज आपको वकालत के आखिरी 2-3 साल के अंदर इंटर्नशिप्स करके अपना रूट बना लेना चाहिए था. That is why we insist on internships. आप there's a video that you guys should check out. मैंने YouTube के ऊपर पढ़े हुए 2-3 videos हैं कि how to plan the first 5 years and the last 2 years of your law college to improve your career. बात ये है कि ये होमवर्क पहले हुआ होना चाहिए था, लोगों से मिल के आपकी नेटवर्किंग इस तरह होती है. इस चीज की नेटवर्किंग ज्यादा क्रूशल है कि आप इंटर्नशिप करें. नहीं यार, इसके पास गुजारा ही नहीं हो रहा, मेरा नहीं होगा तो ठीक है, किसी और के पास आप इंटर्नशिप कर लें. Feel out the market, and if you're competent, they would already know you when you graduate होके आएंगे. if you're very good, they'll say कि यार कब आ रहे हो, आओ, जगह मिल जाएगी. और सारे की सारी, this is what you're supposed to do. आपकी नौकरी 2 साल पहले शुरू होती है. आपका और इंटरैक्शन वगैरह और लॉ के बारे में सीखना, ये सारे स्किल सेट काफी अरसा पहले शुरू हो जाने चाहिए. अब अगर आपके पास नहीं है तो वो फिर आपको, आई मीन, यू जस्ट शॉप अराउंड. इब्तिदा में आपको मुफ्ती किसी के साथ करना पड़ेगा, वहां पे जाके अगर कोई आप अच्छा है, इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू आर एसेंशियल फॉर द पर्सन, यू प्रूव योरसेल्फ, फिर आपकी कमाई वगैरह शुरू हो जाती. Definitely, sir, definitely. So, sir, given the technological advancements that have taken place, अच्छा, especially I'm sorry, just one thing. yes, पंजाब के अंदर, पंजाब बार काउंसिल में वी हैव अ जॉब प्लेसमेंट ऑफिस. सो हम आपको सीवी भी बनाना सिखाते हैं, और अगर आपकी कोई कंसर्न्स वगैरह है, शायद नजीर जारा साहब के नाम से एक साहब हमने वहाँ पे डेलीगेट की एक सब कमेटी बनाई हुई है, वो ही हेल्प्स आउट पीपल एज वेल. वो भी हो सकता है, बट जिस हद तक हम कर सकते हैं वो अवेलेबल. आई एम सॉरी, आई शुड हैव मेंशन दैट. सॉरी, आपको क्वेश्चन. so definitely, I would request the audience to check that out. And so the question I was asking was कि अभी जो recent technological advancements हुई हैं, especially जो अभी use of artificial intelligence भी legal field के अंदर introduce किया गया है, how important do you think is familiarity with the legal technology and legal tech training? देखिए, एआई तो बीच में मजाक है. आई एम वेरी वेरी इनटू इट. बात यह है कि अब मैं हाथ जोड़ के तमाम दोस्तों को कहता हूं कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द निश थिंग. आपका जो सारे का सारा सिविल कोर्ट में जहां से आपकी कमाई होनी है, वो झटकी की नीचे की वकालत है. ये जो सारी की सारी चीजें आईटी और ये जो सारी की सारी चीजें, यस दे आर गुड, बट 5 साल के बाद नीश से दूर रहिए. बट वंस अगेन, हाँ, पाकिस्तान लॉ साइट इज एन एसेंशियल टूल. हाँ, माइक वर्ड प्रोसेसिंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. हैविंग एन ऑनलाइन रजिस्टर इन योर मोबाइल अवेलेबल, वो भी सारे स्किल सेट्स आईटी वगैरह के बहुत बेहतर हैं. But to go ahead and try to specialize in that, because that is the very it thing right now, I very strongly recommend against it. और वो पीछे भी एक एक दो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी वो जज साहिबान से भी पूछ रहे थे, जज साहिबान भी एंगेज कर लेते हैं कि जी एआई के ऊपर क्या, एआई जजेस होंगे, ये होगा वो होगा. राइट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, नॉट फॉर अनदर 5 to 10 years. पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, बाहर होता रहेगा. कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग उन चीजों वगैरह के अंदर होगा. बट आई very strongly say कि your basic skill set, और खास तौर पे उर्दू वाला स्किल सेट, और खास तौर पे सिविल कोर्ट वाला स्किल सेट, और जहां से कमाई हो सकती है, प्लीज फोकस ऑन दैट फर्स्ट. दिस स्टफ विल फॉलो. 2-3 साल के बाद खुद ब खुद यू विल पिक अप. बट हाँ, कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेसी इज एसेंशियल, और ability to research on Pakistan law site is useful, but I normally prefer manual research वाले बंदे and बंदियां. Okay, sir. So, so legal writing and publishing is also one of the many ways that enhances the reputation of a lawyer and their expertise in specific areas of law. So, how do you think that the recent law graduates can engage in the process of legal writing and publishing? I mean, they can write it and get it published in the newspaper, but once again, I would not recommend that to them. उसके कोई पैसे नहीं मिलते, मुकदमे वगैरह कभी नहीं. माई फिलोसफी इज इंटायरली डिफरेंट. अगर ड्राफ्ट करना ही है तो जाओ पिटिशनर ड्राफ्ट करो यार. अगर ड्राफ्ट करना ही है, एफिडेविट ड्राफ्ट करो. अगर करना ही है तो आप उसको कहते हैं जवाब दावे, मिसलेनियस एप्लीकेशंस, फॉर्म्स भरने सीखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आपकी मार्केटेबिलिटी वगैरह करने के लिए आर्टिकल्स, हाँ, टीवी पे भी आप आ सकते हैं, आप एंकर भी बन सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें. बट उसका आपकी वकालत से डायरेक्टली, इब्तदा की वकालत से कोई इतना ज्यादा है नहीं ताल्लुक. योर परफॉर्मेंस, योर केसेस यू विन,
they are going to matter. But अगर आप साइट पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं और न्यूज़पेपर्स में छपता है, तो I mean I'm not saying don't do it, but I don't think that should be your first ऑप्शन एंड सेइंग कि जी मैंने तो 5 आर्टिकल लिख दिए, मेरा मुकदमा मेरे पास एक भी नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि पिछले मुकदमे के लिए जो बंदा आया था तुम्हारे से तो प्लेंट ही नहीं ड्राफ्ट हुई थी, तुमने फिर आर्टिकल लिख डाला था। तो स्टफ लाइक दैट मैं कह, वंस अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू बी फोकस्ड। हाँ, विजिबिलिटी करने के लिए आप अपनी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहा होता हूँ, तो मैं बताता हूँ लोगों को मैं इस्लाम, आई कांट एडवर्टाइज माई सेल्फ, बट मैं बताता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा हूँ। दैट इज वन वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ सारों को, कि मैं बड़ा मेहनती वकील हूँ और मैं बहुत बिजी वकील हूँ लीगल इश्यूज पे। दिस वीडियो दैट आई एम डूइंग ऑन अ संडे इज adds to my luster basically. It says कि जी प्रोफेशनल वकील है, आपने मेरी तारीफ वगैरह भी काफी ज्यादा की है कि जी मैं प्रोफेशनल वकील हूँ और ये सारे का सारा, तो इसीलिए मैं बीच में संडे को आया हूँ। बट व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट इज कि इट्स डजंट हार्म, बट वंस अगेन ये जो नीश साइट के ऊपर जो साइड एक्टिविटीज होती है ना, जो आप सेकेंडरी होती हैं, आप उनको प्राइमरी कभी भी ना बनने दीजिए। इट्स ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग द राइट करेक्ट पिटिशन, एग्जामिनिंग द फाइल, वो ज्यादा जरूरी है। Very well put together, sir. Sir, can you highlight the role of professional organizations and conferences, in a young lawyer's career development and ongoing learning? देखिए, बार काउंसिल के अंदर तो मैं एज आई वाज सेइंग बार वोकेशनल कोर्स, बार एसोसिएशंस के अंदर यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म। आपने किसी चीज के ऊपर काम करना, लिसन, आई मीन फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ यंगस्टर्स डू दिस एज वेल। इब्तदा के अंदर हैव सेमिनार आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन द बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सेट अप जॉब फेयर्स। आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 सीनियर्स को साथ मिलवा के कर लें, और इस तरीके से किया जा सकता है काम अगर। तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स आर इनेबलर्स। ये हम लाइसेंस वगैरह भी करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करते हैं, बार वोकेशनल कोर्स और ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं, हमारी किताबें भी मौजूद हैं, सस्ती किताबें भी आपको हमारे से मिल जाती हैं। बट वंस अगेन हर बंदे का अपना मामला होता है, उससे आप कैसे एंगेज करें। I don't know. Bar vocational course is a good way. It gives you a lot of training. हमारे materials भी online available हैं, वो देखे जा सकते हैं. But once again, use the platform yourself. Everyone keeps waiting for Allah या waiting for Godot कि कोई आएगा और उनकी हालात ठीक करेगा। असल में तो बात सच्ची बात ये है, आपने जो करना है कर गुजरे खुद ही, और बार का ठप्पा लगा के उसका प्लेटफॉर्म करके उसका ऑडिटोरियम इस्तेमाल करके मुफ्त में हो जाएगा। 500 रुपए में मिल जाता है ऑडिटोरियम। आपने प्राइम मिनिस्टर या किसी को इनवाइट करना है, उसको कर लें, वो घुटनों के बल आएंगे बार एसोसिएशन में, वहां सामने आप बैठे होंगे। किसी कॉलेजेस को बुलवाना है, यूनिवर्सिटीज को बुलवाना है, 15 चीजें आप कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स वगैरह जो आपकी कमी कोताही है, 1+ यू कैन डिमांड फ्रॉम मी एज वेल एंड आई विल अरेंज इट। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, जिस चीज के ऊपर काम करने की, दैट इज व्हाट आवर फंक्शन एज वेल। तो उस लेवल के ऊपर आपको बार, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी एंगेज्ड विद द बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स एज वेल। Very well said, sir. Sir, so in the kind of world that we live in today, ethical considerations, they do influence a lawyer's decision-making process as well. So what steps can aspiring lawyers take in order to ensure that they maintain their ethical considerations and standards? ये देखिए, हमारे कभी कोड ऑफ कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उसके अंदर, रूल्स के अंदर। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स के अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल, गलत कह रहा हूँ, उसमें मौजूद हैं। देखिए, मेरे कहने से या आपके कहने से किसी ने ईमानदारी नहीं करनी। बात ये है कि अगर आप पैसे कमाने के लिए प्रोफेशन आ रहे हैं, तो ये प्रोफेशन है, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, इसमें आपको अल्टीमेटली इफ यू आर गुड, आपको अल्टीमेटली पैसे भी मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल कंसर्न पैसों की नहीं है। 60% ऑफ द केसेस आई डू अटेंड टू बी फ्री। सो पैसे, एथिक्स, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर से आएंगी। दिस इज द प्रोफेशन। इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स नहीं कहते, कहते हैं वैसे, बट दिस इज प्रोफेशन ऑफ कायदे आजम। दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ लिंकन। लिंकन वाज एक गांव से, बैक वाटर से, इलिनॉय से आई थिंक आया था। घर में बिजली भी नहीं थी, माँ मर गई हुई थी, बाप लकड़ियां काटता था सारे का सारा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना, लेकिन एट द एंड of it all he got shot in the head and he died when he was a president because he was standing for something that is right. अब बात यह है कि ये आप किसी आसान प्रोफेशन के अंदर नहीं आ रहे। दिस इज नॉट फॉर अनएथिकल पीपल यहाँ पे, लेकिन आपको बहुत मिलेंगे।
आपका वो क्या उसको कहते हैं, प्रेसिडेंट निक्सन भी वकील ही था, जो कि द वर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट मौजूद था। और वकालत के अंदर अगर दो नंबरी करने के लिए आप अगर आते हैं तो बहुत पोटेंशियल है करने के लिए, बिकॉज बेवा आपको ब्लैंक कागज के ऊपर अंगूठा लगा के दे देती है, बेटा ये मुकदमे में कर लेना। और अगर आपने अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर करवा ली या उसकी कर ली, तो वो है आपका मॉरल कंपस। हमने रूल्स बनाए हुए हैं, अगर आप पकड़े जाएंगे हम आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आपको फारिग करवा देंगे। But once again, moral compass, this needs to be a profession of the most ethical and the most honest people. It is a profession, it is not a job. Profession is something more than a job. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यार आप यंगस्टर हो के अगर आप बाकी तो सारे के सारे बुढ़ापे में आके करप्ट हो ही जाते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? अगर आप इसके अंदर पैसों के लिए फूफा के लिए आ रहे हैं, तो फिर जाओ यार। तुम्हारे और बंदर में क्या फर्क है? बंदर भी डुगडुगी भी नाचता है, या और भी बंदे पैसों के लिए नाच देते हैं। तो I mean, this is a very serious problem that you pointed out about the profession. But yes, this needs to be the profession of the most ethical people. कायदे आजम गांधी, नेहरू ने भी मेरे ख्याल में लॉ किया हुआ था, मंडेला, अलामा इकबाल, they changed the map of the world. So उसमें प्राइड लेनी चाहिए। आप उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, so hold yourself up to that standard. Very well said, sir. I could not have agreed more. So, moving to our last question for today, sir, can you highlight the importance of a successful mentorship experience for fresh graduates? And what advice would you give to the students and graduates on finding suitable mentors? You mean, what do you mean by mentors actually? Do you mean seniors actually get joining someone's Yes, sir. chamber? Yes, sir. Oh yeah, so being an intern with someone, or what do you mean by mentorship? सर बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट आप किस सीनियर को ज्वाइन करें, एक अच्छा मेंटोरशिप एक्सपीरियंस किस तरह से शेप अप करता है एक लॉयर को, और हाउ व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू स्टूडेंट्स ऑन फाइंडिंग अ गुड मेंटोर? देखिए, मेंटरशिप के ऊपर तो मैं एक चीज सीधी सीधी पॉइंट आउट कर दूं, नो वन हैज द टाइम टू बी योर मेंटोर। आपका अगर ख्याल है कि वो बड़ा प्रोफेशनल वकील और उसमें बैठ के पढ़ाएगा, तो आई एम टेलिंग यू दैट my father did no one loved me more than my father, but my father never sat me down and said कि बेटा इस तरीके से कर लो, ये कर लो। इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी में वालिद साहब की जिंदगी में जब भी उनसे कोई सवाल किया है, उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें हैं, किताबें पढ़ी हुई है, तुम खुद क्यों नहीं जाके चेक कर लेते? ना समझने की इसके अंदर ये चीज है कि माय फादर डिड द नाइसेस्ट थिंग दैट ही कुड फॉर मी, बिकॉज ही वाज इंश्योरिंग दैट आई हैव द स्किल सेट टू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट। मेंटरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट आउट किया है कि मेंटर हिमसेल्फ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वो बेशक देखने में कोई अच्छा ना हो, ना ज्यादा मशहूर बंदा हो, मगर अगर उसके पास सिविल कोर्ट में 28 फाइलें केसेस एक दिन में लगे हुए हैं, एंड यू कैन लुक एट हिज फाइल्स, एंड अगर वो आपको फॉर एग्जांपल आर्ग्यू करने के लिए नहीं देगा, आप उसकी फाइलें, वो मुंशी भी बड़ी मुश्किल से आपको कागजात दिखाते हैं, मगर अगर वो आपको एक्सेस दे रहा है ना, दैट इज द पर्सन यू नीड टू मेक योर मेंटर। सैयद अली जफर साहब को मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, उनके चेंबर में मैंने काम किया, लेकिन अली साहब का मैंने स्किल सेट देखा है, उनको ऑब्जर्व किया है। अली साहब नेवर सैट मी डाउन एंड सेड कि मोहम्मद इस तरीके से करो, ये मैंने एसएम जफर साहब को भी देखा है अली साहब से। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो नोट्स किस तरह बनाते हैं, फाइल कैसे तैयार करते थे, क्या क्या चीजें देखते थे, और मैं उसी तरीके से करता हूँ। नाउ that is what your expectation of a mentor should be, he can be a very high and mighty one as well, but normally he will have less time for you and his case load will be of the nature जो कि आपको करने का कोई फायदा ही नहीं है इब्तिदा के अंदर। आपने तो नीचे सादा मुकदमा सीखना है, जिसका दिन के अंदर वो जो सिविल कोर्ट के कीड़े नहीं होते, वहां से आपने काम शुरू करना है। बिकॉज अपील में भी जब आप जाएंगे, आपको अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, अगर आपको नीचे का उर्दू के डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने आते, ऑर्डर शीट नहीं देखी हुई, फॉर्म्स वगैरह नहीं देखे हुए, सारे के सारे कैसे भरते हैं, तो आप अपील में क्या आर्ग्यू करेंगे? ये सारी की सारी चीजें। सो वंस अगेन, मेंटरशिप वाला जो क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई कीप ट्विस्टिंग योर questions as well, but mentors are not very
important for me. What is more important is the opportunity they give you. तो वो वाली अगर चीज होगी तो यस आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द अली सप्तान फजली साहब थे, सैयद अली जफर साहब थे, उनके चेम्बर्स में मैंने काम किया, बट द वर्क वाज व्हाट मैटर टू मी. और उनसे डायरेक्टली मैंने नहीं देख सीखा, मगर उनको देख के. सो दैट इज व्हाई यू प्रॉब्ली नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट लॉयर, बिकॉज अगर उसको वकालत करनी आती नहीं है या वो कोर्ट जाता ही नहीं है तो फिर तो कोई तुक नहीं है. गुड स्किल्स, ईमानदार बंदे के पास जाइए. 2 नंबर नंबरी के काफी आपको किंग्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको भी 2 नंबर अपने साथ बीच में बना देंगे. पॉलिटिकल वालों से दूर रहिए प्लीज. पॉलिटिकल वाले या जो ओहदेदार हैं या फिर पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के साथ एसोसिएटेड हैं, यू माइट थिंक कि वो यार इसके साथ मैं फलां ये लीडर है, इसके साथ मुझे सेल्फी उतारने का मौका मिल रहा है और वो हमारे दफ्तर में आ रहा है, बट इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग टू यू अदर देन आपका सोशल मीडिया के अंदर 2 मिनट के लिए. सो वंस अगेन यू नीड टू बी वेरी 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 फोकस्ड. क्या सीखना है, कौन सिखा सकता है, दैट इज योर आइडियल मेंटर. जिस जो कमी बेशी आपके अंदर है उसको कौन फुलफिल करवा सकता है और आपको सबसे ज्यादा एक्सेस कौन देता है, दैट वुड बी द योर बेस्ट चेंबर ऑफ चॉइस एंड दैट वुड बी योर बेस्ट मेंटर. मेंटर के बगैर इस प्रोफेशन के अंदर वैसे गुजारा नहीं है. एज इन यू नीड टू हैव एक्सेस, बिकॉज ये इसमें अभी तक हमारा ट्रेनिंग का कोई मैकेनिज्म इतना अच्छा है नहीं. अगर हम बार वोकेशनल कोर्स भी जो करा रहे हैं वो 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते में हम जादू से तो नहीं आपको जबरदस्त वकील बनाएंगे ना. इट्स लाइफ लॉन्ग थिंग. तो वो आप जरा देख लीजिए. अदरवाइज मीडिया पे मैं तो हूँ. फॉलो मी, आई एम एवरीवन्स मेंटर. Yes, sir, surely. Very well said, sir. So, thank you so much, sir. I am done with my questions. And if you so politely allow, sir, can we take questions from the audience now? दीजिए प्लीज. Very well. So, can we have the questions on the screen? Okay, That we sir. should go Miss to a Shiza. firm where we can get maximum cases as a young law, but firms do not really take who are यार वो अगर अगर ऐसा कोई चेंबर है जो कि आपको फाइल्स नहीं देखने दे रहा तो फिर आप मत जाइए वहां पे. मूव ऑन टू अ नेक्स्ट चेंबर. आई हैव हर्ड दिस कंप्लेंट क्वाइट अ लॉट, बट इट इज अनबिलीवेबल फॉर मी कि आपको एक्सेस फाइलों का नहीं दिया जा रहा. अगर आप काम करते हुए अपने आप को आप दिखा सकेंगे कि यू कैन ऑर्गेनाइज दम, यू डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ द फाइल, और या यू आर नॉट इरिटेटिंग हद तक कि जी एक एक अलग चीज वगैरह कर रहे हैं, इफ यू आर सेल्फ कंटेंट, तो आई सीरियसली डाउट कि एनी चेंबर्स गोइंग टू, अगर उन्होंने आपको अपना स्टेक ऑन किया हुआ है वो आपको फाइलें वगैरह नहीं देखने देंगे या कोई आपसे काम नहीं करवाएंगे. Okay, sir, Shiza Amir is asking, where can we write law articles? Any platform? देखिए पीएलजीएस के अंदर पाकिस्तान लॉ जर्नल या पीएलडीज वगैरह में, मगर वो काफ़ी एक्सक्लूसिव अच्छे सोफिस्टिकेटेड होते हैं आर्टिकल. यू कैन राइट इन द न्यूज़पेपर एज वेल, बट दे विल नॉट टेक हार्ड कोर. वो तो इश्यूज के ऊपर नॉर्मली आर्टिकल ऑप-एड टाइप्स के लेंगे जिसमें आप जजमेंट्स नहीं साइट कर सकते. सोशल सोशल मीडिया इज देयर, या फिर आपके कॉलेजेस के लम्स वगैरह के रसाइल वगैरह मौजूद हैं, वो हैं. बट वंस अगेन एज आई वाज पॉइंटिंग आउट, प्लीज draft petitions, pleadings. Legal articles should be lower on your preferences, because जब तक आप डीप लेवल के ऊपर करना नहीं कुछ खुद एंगेज करेंगे ना, ये आर्टिकल वगैरह लिखने का कोई फायदा नहीं. इट्स एन एकेडमिक एक्सरसाइज व्हिच डजंट हेल्प यू दैट मच इन द प्रोफेशन. हाँ, लिखने पढ़ने की आपको आई मीन आपकी लिखने की एबिलिटी आपकी इंप्रूव हो रही होती है, बट वंस अगेन अगर करना ही ना यार, उर्दू के अंदर जरा लिख के देखिए. क्योंकि आप ज्यादातर जितने भी दोस्त देख रहे होंगे उनके उर्दू की के अंदर मुकम्मल तौर पे वेले होंगे, और आपके नीचे ज्यादातर प्लीडिंग, ऑर्डर शीट, एविडेंस, इसको कहते हैं सारी की सारी एफआईआर सारी उर्दू में है. सो अगर लिखना ही है तो उर्दू के अंदर लिखने की कोशिश करें, और ताकि रवानी जुबान के अंदर थोड़ी सी आए. मैं बहुत ज्यादा खुद भी बर्गर हुआ करता था. Sir, Mr. Abdul Sattar is asking, sir, क्या law student को LLB के law year के लास्ट ईयर में प्रैक्टिस साइड जाना चाहिए या आफ्टर ग्रेजुएशन बेस्ट रहेगी कोर्ट जाना? भाई प्रैक्टिस तो आप वैसे नहीं कर सकते, लेकिन कई बंदे शुरू भी कर देते हैं एक्चुअली बीच में पकड़ के, और केसेस भी पकड़ने शुरू हो जाते हैं, कोर्ट में भी पेश होना शुरू हो जाते हैं.
भाई मैंने पहले भी कहा कि आप मेरा वीडियो एक जरा चेक कीजिएगा कि वकालत के आखिरी 2 साल, सॉरी कॉलेज के लॉ कॉलेज के आखिरी 2 साल और वकालत के पहले 3-5 साल कैसे करने चाहिए। उसमें मैं एक बात बार बार ये कहता हूँ कि मार्केट कोर्ट वगैरह के अंदर जाके हाँ अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी जो चीज आप पढ़ रहे होंगे कि अच्छा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये इम्प्लीकेशन है, इस मुआहदे में इस तरीके से लिखा हुआ। आपकी वैसे भी एक्साइटमेंट होगी हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट है, ये फलां जज साहब है, इनके पास मैंने जिनकी जजमेंट पढ़ा था वो ये हैं, और ये देखें मोहम्मद अहमद कयूम इस तरह आर्ग्यू कर रहा है, ये फलां ये आर्ग्यू कर रहा है, इस तरीके से यूल बी एक्साइटेड अबाउट इट और यू विल सी कि हाउ अ लॉयर प्रिपेयर्स। सो आपको मैं मुकदमे करने के लिए नहीं कह रहा इब्तदा के अंदर, लेकिन कानून के आसपास अगर आप इब्तदा में ही होना, सेकंड थर्ड ईयर में ही होना शुरू कर दें 5 साल की डिग्री में, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बल्कि बहुत ही जरूरी है, होना चाहिए। छुट्टियों में करें या वैसे इंटर्नशिप्स वगैरह। Okay, so we have another question. Mr. Ali Sumra is asking, should we opt for masters in law right after completing LLB? Is bar at law still competent or just a prestige stigma? And I've heard it's hard to स्टिग्मा get नेगेटिव people. चीज होती है यार, ये बार और लॉ इज अ पॉजिटिव थिंग। मैं वैसे अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लगाता है, आई डिड डू द बार वोकेशनल कोर्स, वो बहुत एलीट हो जाता है इस मामले के अंदर। यार मेरा मौकिफ ये है कि वकालत अगर करनी है तो वकालत करनी चाहिए, दोनों डिग्रियां, इवन दो आई थिंक बार वोकेशनल कोर्स वाज प्रोबेबली द बेस्ट कोर्स आई एवर डिड इन माय लाइफ। वो आपको बोलना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, लेकिन वंस अगेन अंग्रेजी के अंदर करवा रहे होते हैं, इंग्लैंड के लिए करवा रहे होते हैं। प्यूपलेज मिलती है या नहीं मिलती, हाउ इज दैट रेलेवेंट अगर हमने पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करनी है। या अगर आपने वहां पे करनी है, यस इट इज डिफिकल्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स टू गो अहेड एंड गेट अ प्यूपलेज इन इंग्लैंड। प्यूपलेज पाकिस्तान में नहीं होती। So if you have the time, we can take more questions. जी जी, आई एम Uh, एंजॉयिंग दिस। so Miss Hijab is asking, chambers give research work more rather than drafting work, and as you said, research is not mean. So what should we do? Like every chamber requirement for young associates is to do research and read the files. जी, रीड द फाइल्स एंड ड्राफ्ट समथिंग योरसेल्फ ना यार। बात ये है कि यस, मुझे मेरे दफ्तर में अगर मैंने आपको बिठाया हुआ तो यूर फ्री स्लेव लेबर फॉर मी, सो दैट इज व्हाई आई हैव यू देयर। और अगर आपसे आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो 2-4 खतूत भी लिखवा लूंगा और रिसर्च के लिए कर लूंगा। बट बात यह है कि बाकी जो 8 घंटे हैं, रिसर्च तो आपने कर ली, गप्पे मत लगाइए 2 या 3 घंटे में बैठ के आप पीएलडीज पढ़ें, राइट? एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोफेशन, what you ये हर जजमेंट यू शुड ट्रीट इट एज एन अफसाना, एज अ शॉर्ट स्टोरी। इस पार्टी ने ये कहा, अच्छा अगर मैं इसके खिलाफ होता तो मैं क्या कहता, अच्छा इस केस के अंदर दूसरे ने क्या कहा, अच्छा उसने ये नुक्ता रेज किया, अच्छा तो अब दोनों ने ये किया, इसका ये नुक्ता, इसका ये, माय लीगल स्किल्स आर क्या क्या यार, इसमें सही जवाब क्या होगा, व्हाट्स द जज गोइंग टू डिसाइड, अच्छा इस जज ने ये डिसाइड कर दिया, अच्छा इस नुक्ते पे किया, अच्छा वो आपके कंप्यूटर में आ गया। दिस इज हाउ यू एंगेज विद द स्टोरी, इट्स अ स्टोरी, engage with it. No one's going to give you a case to do it at the beginning of your career। और अगर आप उनके अंदर ही फंसे रहे ना सिर्फ अपने अपने सीनियर के केस के अंदर, वो तो 5 साल चलेगा केस। पीएलडीज, एससीएमआर, पीएलडी ज्यादा जरूरी, सीएलसीज वगैरह जो ऑर्डिनरी सिविल के केसेस वगैरह होते हैं, उनको इस तरह पढ़ें, प्रिपेयर योर, मेक योर इंस्टिंक्ट्स, देन लुक एट द वेरियस डिफरेंट फाइल्स की ड्राफ्टिंग कैसे की हुई है। दिस इज हाउ यू लर्न, this is how you engage yourself with all of this and develop your skills। otherwise तो आप मुकदमे, मेरी तरह हर बंदा तो शहजादा नहीं है ना कि जिसका तीसरी पुश्ता वकील था और पके पकाई खीर मिली और केसेस मिल रही थी और मैं सर्जरी के लिए मुझे उन्होंने वैसे ही पकड़ा दिए, आपको तो नहीं मिलने लगे। तो दैट डजंट मीन कि you quit the profession and just leave। you have to make do with whatever access you can get, and the first thing, the most important thing for वकालत is this thing, आपका जो सर है जुबान से भी ज्यादा जरूरी है, दिल से ज्यादा भी, एक्चुअली जो आपकी कॉन्फिडेंस है उससे भी ज्यादा जरूरी है। एनालाइज इट, कम अप विद द पॉइंट, व्हाट द पॉइंट इज, एंड हैव अ डेटा अपने ज़हन के अंदर कि अच्छा यार इस नुक्ते के ऊपर मैंने देखा था फलां चीज है, सुबह मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हो रहा हूँ, उनकी मैंने जजमेंट पढ़ी थी, वो तो उसके ऊपर इस तरह तरीके से करते हैं, उनके फेवर में जजमेंट लेके जाएं। act as if you are doing it, you are not there to carry people's files, and I'm not going to sit you down and say कि भाई पढ़ लिया कर, ये समझ लिया कर, ये कर लिया कर। आप, now you're a grown up and you have to sort it out yourself, that is the most important thing।
ये वाला कंप्लेन करके यहाँ पे जिंदगी, अनफॉर्चुनेटली द थिंग अबाउट ग्रोइंग अप इज कि यू टेंड टू थिंक कि जी वो बच्चों वाला ही चीज, अब आप बच्चे नहीं है, अब आपने अपना स्किल सेट खुद ही बीच में ठीक करना है। और वो इन चीजों के साथ, ये इंग्रेडिएंट सारे पड़े हुए हैं, उसके साथ आप डिश भी बना सकते हैं, या वहां पे पड़े पड़े आप 3 महीने के बाद मेरे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके चले जाएं, एंड यूल स्टिल बी जीरो। मेरे पास तो ऐसे भी एसोसिएट्स रह चुके हुए कि इसको कहते हैं एक एक साल के लिए, कि वो हफ्ते में 2 दिन आते थे वगैरह, पहली दफा काम दिया, दूसरी दफा नहीं, उन्होंने वहां पे मौजूद ही नहीं थे, दूसरी दफा काम ही नहीं दिया, 8 महीने के बाद छोड़ के गए, तो मुझे उनका नाम भी नहीं याद। कभी कभार टाकरा हो जाता है कि मैं आपका एसोसिएट था, तो इट्स व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट भाई। बट कई ऐसे हैं, आई मीन पाकिस्तान का जो करंट लॉ सेक्रेटरी है वो मेरे दफ्तर से, इंग्लैंड में है, दुबई में है, सो इट्स व्हाट यू मेक योरसेल्फ। So I think this is probably the last question. Mr. Mohammed Hassan is asking, sir, any books which will help us for the sake of knowledge? नॉलेज नहीं यार, स्किल सेट का मैं कह रहा हूँ, नॉलेज के लिए तो ये पीछे सारी किताबें पढ़ी हैं, कोई भी पढ़ना शुरू कर दो, बल्कि वो चीज़ें पढ़ो जो कि तुम्हें पसंद है। अगर कॉमिक्स पसंद है, या ये अगर म्यूजिक की किताबें या स्पोर्ट्स की पसंद है, बहुत ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज पढ़ने की एबिलिटी डेवलप हो रही है। तो जब फाइल पकड़ोगे हाथ में तो वो होगा। अगर उर्दू में कमजोर हो और वकालत सारी उर्दू में है, तो बेशुमार उर्दू पढ़ने की कोशिश करो, अगर नहीं भी अच्छी लगती, आखिरी चट्टान पढ़ो, उम्र यार की कहानियां पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, वट एवर, एक्चुअली ये करके आपको अपनी लाइफ को बनाना ही है। मैं सुबह उठता हूँ, तो जब दफ्तर जाने जाते हुए गाड़ी के अंदर अगर ड्राइवर साथ हो, तो मैं अंग्रेजी का क्रॉसवर्ड कर रहा होता हूँ कि मेरे दिमाग अंग्रेजी में चलना शुरू हो जाए, वोकैबुलरी चलनी शुरू हो जाए। कोर्ट में जाने से पहले जाता जाता किसी एक डेढ़ बंदे से गप भी कर लेता हूँ, जुबान चलनी शुरू हो जाए। मुख्तलिफ स्किल सेट, आपका लाइफ स्टाइल, यू नीड टू अडाप्ट इट। अभी भी मैं पुरानी किताबें उठा के लाया हूँ, बिकॉज व्हेन माय फादर वाज अलाइव, आई वुड बी शॉक्ड अबाउट कि यार सारा दिन दफ्तर में पढ़ते रहते हैं, फिर घर आके पढ़ना शुरू कर देते हैं। व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम हिम वाज कि इट इज, दैट्स हाउ यू बिल्ड मसल्स, दैट इज हाउ यू स्टे इन टच, कि आप अपने पसंद की चीज पढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद वो फिर बीच में जो जब आपके पास लॉ की किताबें इतनी मोटी आती है, तो आपने इतनी मोटी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ी होती है, तो यू हैव द एबिलिटी टू पिक अप एज वेल। रही बात में एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर बंदे को, 2-3 किताबें आपको मैं रिकमेंड करूंगा। एक इंडिया से आती है, आर्ट ऑफ अ लॉयर, इतनी मोटी बीच में किताब है, यहाँ पे पीछे पड़ी हुई है, एम बी मलिक की, जस्टिस मलिक की, वो मैं आपको बीच में दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो आप लड़कों के लिए, एक लड़के ने ही लिखी हुई है, इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन एंड प्रैक्टिकल। 3 किताबें, प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन और इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, फेडरल लॉ हाउस ने छापी है। लड़के का नाम है, यार मैं हर दफा भूल जाता हूँ, यार बहुत प्यारा लड़का है, और मैं हर दफा अब अभी उसका नाम भूल गया। उसका नाम है खटक, मसूद खटक, मसूद खटक ने लिखी है। वो नाराज होगा ये वीडियो देख के कि हैं सर मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ और आप मेरा नाम भूल जाते हैं। मसूद खटक ने फेडरल लॉ हाउस के लिए किताब लिखी है। उस किताब में अच्छी चीज ये है कि वो आपको प्लेंट्स दिखाती है, और ना सिर्फ प्लेंट दिखाती है, वो दिखाते है ये फॉर्म है, ये स्टैंप है, ये लिमिटेशन का ठप्पा है, इस तरीके से देखने में होता है, ये डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल गाइड के वकालत एक्चुअली कैसे करते हैं। That is one of the essential books. I also recommend Law of Pleadings by M. Mahmood. वो इतनी मोटी किताब है जिसमें मुख्तलिफ नौयत की प्लीडिंग, नकल नहीं तो उतारनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, वो है। सीपीसी इज अ बाइबल, हमारे की आमिर रजा साहब ने भी अगर सिविल में काम करना है वो किताब पढ़ें, वो बहुत इसेंशियल है, हर बंदे के पास होनी चाहिए। सिविल मेजर एक्ट, बेयर एक्ट पकड़ के इतनी सी किताब मिल जाती है। पंजाब बार काउंसिल इतनी मोटी उन्होंने छापी हुई है, बहुत सस्ती एट कॉस्ट मिल जाती है, 1000, इतनी मोटी किताब 1000, 1500-2000 के अंदर मिल जाती है। जितने सिविल के कानून है एक ही जगह पे, उस कानून को पढ़ना शुरू कर दो। आई एम नॉट सेइंग रट्टा लगाओ, बट अपने आप को कंफर्ट लेवल उसके साथ की करना शुरू कर लो। तो हर फील्ड के अंदर है, किताबों के ऊपर तो मैं मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह भी करता रहता हूँ, उस पर भी देख लीजिएगा। बट या इस तरीके से देख लें, और सबसे अच्छी किताब वही है कि जो आप पढ़ लें, जो आप पकड़ के आप कहें कि यार मैं पढ़ लेता हूँ, वो आप खुद ही अपना टेस्ट और अपना उसके साथ डेवलप करेंगे। थैंक यू जी, जिंजुआ साहब। Yes, definitely, definitely, sir. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, as we come to the close of today's webinar, I want to express my sincerest gratitude to our esteemed guest speaker, Mr. Mohammad Ahmad Qayyum.
Sir, your expertise and passion have inspired us all to think deeper and explore new avenues in the legal field. Your dedication to your field is quite evident, and we are grateful for your time and effort that you have put in today's discussion. Sir, before we finally conclude, is there any message that you would like to share with the young students and graduates who are watching this session as a key takeaway for future? Yeah, सबसे पहले तो actually before I come to that, I'd like to thank you as well. It actually is an honor for me because जितने insightful और जितनी detail के अंदर आपने ये काम वगैरह किया, this is what is expected of all students as well, and you are actually doing it. So a salute to you and your group as well. यार देखें, insofar as what the takeaway is, यार देखो, the thing with life is कि you have to do it. बिस्तर से अगर नहीं उठोगे या अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो किसी के पास जादू का टीका नहीं, आपके वालिदैन के पास भी नहीं है कि वो आपको ठीक कि वो आपको सक्सीड वगैरह करवा सकें। आपको खुद ही धक्के खा के गलतियां करके खुद ही सीखना पड़ेगा। देयर इज आई लव माय किड, आई लव माय सन, आई लव माय डॉटर, बट आई वो जब तक नहीं खुद करते, मेरे पास कोई टीका नहीं है कि मैं उनको बीच में ये सारे का सारा सिखा सकूं कि भाई इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे वालिद साहब ने जब भी मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा आंखें हैं, जा यार खुद देख ले यार, तू क्या लगा हुआ है बीच में पकड़ के, खुद क्यों नहीं पता करता, बल्कि मुझे भी ये दो अथॉरिटीज दो नुक्तों पे ढूंढ के ला के दे। ये सारे का सारा अपॉर्चुनिटी इज ऑल दैट मैटर्स इन योर लाइफ। दूसरा, प्लीज लुक एट योरसेल्फ। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से कि जी सिस्टम करप्ट है, सिस्टम टूटा हुआ है, ये फलां बंदा जज दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, ये है, चेहरे देखे जाते हैं सारे के। सो व्हाट, यू हैव टू सक्सीड। क्या दुकान बंद करके ये जितनी डिग्री वगैरह करने के बाद घर चले जाना है और बैठ के वहां पे रोते ही रहना है सारे का सारा, या कोई और किसी और चीज में चले जाना है? सी, दिस इज द प्रोफेशन ऑफ लायंस एंड लायनेसेस। आपने अपने आप को खुल के अग्रेसिवली करना है, और अपने आप में अगर कमी बेशी है, इससे बेहतर दुनिया में कोई प्रोफेशन है नहीं। इट गेट्स मी आउट ऑफ बेड, ये अल्लाह मियां की नेमत है। और मैं किसी प्रोफेशन में होता तो मेरे से बिस्तर से ना निकला जाता, फिर सेम डे सेम थिंग। दिस इज द मोस्ट फन थिंग देयर इज। You get paid to get justice for people, you get paid to learn, I get paid to read these books that I ये है वगैरह, and I absolutely love it। और मेरे से दो लफ्ज नहीं बोले जाते, तब मैं फर फर पटर पटर करके आपके सामने लगातार बोलता जा रहा हूँ इतनी देर से वगैरह सारे का सारा। इट्स इम्प्रूव्ड मी। सो लव लॉ, और उसको टेक इट अग्रेसिवली अच्छे अंदाज के अंदर यहाँ पे अपने इसके अंदर करेंगे तो इट विल रियली पे यू बैक, एंड इट विल गिव मीनिंग टू योर लाइफ, एंड इट विल मेक यू हैप्पी, और इट विल गिव यू गुड नेम एज वेल। और देखें, सोशल मीडिया पे लोग बैठ के आपकी तारीफ भी करेंगे और आपके इंटरव्यू भी करेंगे। Thank you so much, sir. Once again, your insightful words will resonate with us as we continue to थैंक यू। delve deeper into this. We look forward to future opportunities to collaborate and learn from you, sir, inshallah. So, having said this, ladies and gentlemen, we have now come to the conclusion of another invigorating and truly amazing webinar. On behalf of the Law Students Council, I would like to thank all the participants for joining us today. Indeed, your active participation has been instrumental in making this webinar a success. I hope that you have learned something new today. We will be back again with another interesting topic and another distinguished guest. Till then, stay connected with us on our social media platforms for updates on future webinars and events. Thank you so much, sir. Once again, goodbye थैंक यू and मैम, Allah Hafiz. प्लेजर, थैंक यू।